Good morning. Today I am going to discuss about next chapter acids, bases and salt. Introductions. The sure and bitter taste of food are due to the acid and bases respectively present in them. If someone in the family is suffering from problem of acidity after overeating, then family member suggest as Redmi, lemon juice, vinegar or baking soda solutions. This is the introduction of acid bases. Next, acid. Acid are sure in taste and change blue litmus to red. According to the Arrhenius theory, all those molecules which give H plus in aqueous solution are called as acid. Its mean एसिड श्योर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे मालिक्यूल जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस प्रोड्यूस करते हैं वे एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल्स HCl in HCl molecules it ionized in the form of H plus and Cl minus because hydrogen atom have one electron to outermost orbits, so it loses in the aqueous medium, so it ionized in the form of H plus and Cl minus. So HCl gives H plus in aqueous solutions, so HCl will be acid. Next, in H2SO4 molecules, as you know, SO4 is a free radical and it have 2 minus charge, so it also ionized in the aqueous solution, it become 2H plus and SO4 minus. As you know, according to the Arrhenius theory, the molecules gives H plus in aqueous solutions are acidic in nature, so H2SO4 will be also acidic in nature. Similarly, H3PO4 also will be acidic nature because it gives H plus in aqueous solutions. ओके, एसिड की जनरल जो डेफिनेशंस आपको बताए गए हैं, एसिड श्योर टेस्ट का होता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मालिक्यूल से H प्लस एक्वस सॉल्यूशंस में देते हैं वे सभी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेसेज। बेसेज आर बाइटर इन टेस्ट एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू कलर्स। According to Arrhenius theory, the molecule which give OH minus in the aqueous solution are called as base. Its mean bases बाइटर टेस्ट के होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग वे मालिक्यूल जो OH माइनस एक्वस सॉल्यूशंस में देते हैं वे सभी बेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH, AgOH, CaOH whole twice, etc. In NaOH molecules, as you know, sodium metal have one electron in outermost orbits, so it lose one electrons, it become Na plus, and OH minus also be OH become OH minus, so it ionized in the aqueous form, it become Na plus and OH minus. So NaOH molecules gives OH minus in aqueous solution, so NaOH will be base. Similarly, in AgOH molecules, Ag, as you know, silver
it loses 1 electrons, so it become Ag plus and OH minus. In aqueous solutions, so AgOH also give OH minus, so AgOH will be base. Similarly, calcium hydroxide, that is also basic nature, because calcium have 2 electron in outermost orbits, so it have tendency to lose the outermost electrons. It become positive charge, so it become carbon calcium 2 plus charge and 2 OH minus. So calcium hydroxide give 2 OH minus, so calcium hydroxide will be also basic in nature. Next, which is very important, all the non-metallic oxide are acidic in nature, while the metallic oxide are basic in nature. It's mean जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, वे सभी नॉन मेटल के ऑक्साइड जितने भी होते हैं वे सभी एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वे सभी बेसिक नेचर के होते हैं।